The position of an electron is measured with an accuracy of itna nanometer. Calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Suppose the momentum of electron is h. Is there any problem in defining this value? So this is from the uncertainty principle. Okay. Now in uncertainty principle तो कराया था ना हमने. Tell me what is the equation for uncertainty principle? Change in position and change in velocity. Or, sorry, not change. Uncertainty in position and uncertainty in velocity. Delta x into delta p, it will be greater than or equal to delta x upon delta p will be greater than or equal to h by 4 pi. Correct. Then we'll have the question what they're asking. Position of the electron. Okay. Is within an accuracy of itna. So x की जो value होगी that is plus and minus 0.002 nanometers. अच्छा next सवाल क्या है आपके पास इसमें? Then they are asking so this will be your delta x है ना, plus or minus 0.002. Okay, and we have this equation here. यहाँ पे बस आपको क्या ये find करना था, इस delta x को यहाँ पे plug in कर दीजिए and you put this equal to. So you will be having delta x 0.002 into delta p, जो least uncertainty होगा that will be equal to what, h upon 4 pi. Okay, and यहीं पे आपके पास delta p क्या आ जाएगा? Delta p will be equal to h upon 0.002 into 4 pi. ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए. ओके, दिस इज द डेल्टा पी. So you will get what? Calculate the uncertainty in the momentum of the electron. So you'll get this is what uncertainty in momentum. ये आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो. You can solve this now ना, yes or no? H की वैल्यू हो जाएगी 6.626 into 10 to the power minus 34. And then you will have 4 pi. Okay, and you have 4 pi into 0.002 नैनोमीटर है. तो नैनोमीटर है तो यहाँ पे आपके पास ये into 10 to the power minus 9 meters भी लिख लीजिएगा. ठीक है, तो इस वैल्यू को 4 pi से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास डेल्टा पी आ जाएगा. ओके, we'll get the delta pi, delta p. Correct? Yes or no? Please tell me. Yes, Hiram. Yes. Next question देखिए, उसमें क्या है फिर उन्होंने बोला सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, उन्होंने बोला कि सपोज कीजिए आप जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज p इज इक्वल टू, उन्होंने बोला है 4 pi अपॉन h अपॉन 4 pi. Okay. क्या है into 0.005 nano meters. This is equal to h upon 4 pi into 0.05 into 10 to the power minus 9 meters. ठीक है, this is the actual saying, ये हमने कैलकुलेट करके आया. एंड द अनसर्टेनिटी क्या है यहाँ पे, p इज इक्वल टू क्या है, h upon 4 pi into 0.002 into 10 to the power minus 9 meters. अच्छा, अब ये बताइए आप, this is the delta p, तो which is greater here? h तो आपका सेम है, 4 pi भी सेम है. If you look at this value, 0.005 is greater. If the denominator is greater, this momentum will be lower. Yes or no? Correct? Yes. And here you can see that 0.002 is what? It is lower. So the delta P will be higher. Correct? Yes or no? Yeah. I can say that P is smaller than delta P. सही है? Yeah. है ना? Now अब ये बताइए आप, this is the measured, और ये है क्या, uncertainty. Now when the measured value is lower than uncertainty, इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं I have measured the length to be 10 meters plus minus 20 meters.
ये चीज तो सही नहीं हो सकती ना कभी भी। आपके पास स्केल जो है, आपके पास जो स्केल आप जो मेजर कर रही है वो 10 मीटर है, और आप अनसर्टेनिटी बता रही है कि जो प्लस एंड माइनस होता है, आप ये बोल सकती है 10 प्लस एंड माइनस 1 सेंटीमीटर हो सकता है ना। बट 10 प्लस एंड माइनस 20 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता। करेक्ट, ये सुनो आयशा, Yes. है ना। सो आई होप यू कैन सी दैट if I write something like this, it doesn't make sense, right? 10 plus minus 20. Similarly, if I will write this ना, p plus minus delta p, और यहाँ पे अगर हम measured value रख दे जो इन्होंने दिया है h upon 4.20.005, then this will also not make sense. No sense of this, because the measured value is lower than uncertainty. That is why it has no sense. And then you will say that what they are asking, comment करने बोल रहे हैं, is there any problem in defining? Yeah, there is a problem in defining this value because the measured value is smaller than the uncertainty, and that is why we can say that the momentum cannot be measured इस केस के लिए। ठीक है, so what is the problem? Measured value is smaller than uncertainty. Okay, clear है? Yes, Seram, tell me. Yes, sir. Okay, fine. Fahad, did you attempt any assignment? No. नो सर, मेरा कंपटीशन था, उसकी तैयारी कर। क्या चीज का कंपटीशन था आपका? सर क्विज। क्विज था? अच्छा, जनरल क्विज या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे? नहीं नहीं, वही जो फेस्ट हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करा था मैंने, तो साइंस अच्छा का अच्छा क्विज। अच्छा, साइंस क्विज था। ओके ओके, तो कुछ प्राइज लेके आए आप? अभी हुआ नहीं है। अच्छा, अभी हुआ नहीं है। ओके ओके, कब है? सर्टन कब नहीं है? है, मंडे या तो मंडे। अच्छा, सर्टेन नहीं है। ये 11th 12th वाले हैं या 9th 10th वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे? 11th। 11th 12th वाले। अच्छा, 28 जुलाई, सो थर्सडे, राइट? नाइट थर्सडे। ओके, सो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सम बेसिक कांसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, राइट द हेडिंग, some basic concepts in chemistry, या फिर लिखिए आप of chemistry। just a second। Okay, fine. So some basic concepts in chemistry in this chapter। इस चैप्टर को ना थोड़ा आप लोग इस तरह से पढ़िएगा कि केमिस्ट्री के बारे में देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिलेट इट टू, एंड यू हैव टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो बेसिकली ये चैप्टर आपको लैंग्वेज बता रहा है केमिस्ट्री का, एंड दैट इज व्हाई इन अ लैंग्वेज यू हैव व्हाट थिंग्स
You will have some letters, you will have some words, you will have some sentences. Okay. So as you would know, in our chemistry, the letters will be, what are the letters of chemistry? These are the atomic symbols, right? The elements. Okay. The words of chemistry are what? The words of chemistry are the molecules that they form, the compounds and the molecules that these letters and symbol forms. And the sentences of chemistry are what? The sentences of chemistry are the chemical equations. Okay, and each of these things are related. If you don't know the letters, you will not be able to form words, and you will not be able to form the sentences. If you don't know the words, you will not be able to form sentences also. Right. So first of all, you understand this part, that you have to take this chapter in a sense that this chapter is going to help you understand this language of chemistry. Then the next thing that I will be telling you somewhere here and there, that there will be many terms that you will be knowing. There are terms that you will be knowing because this is the first chapter in chemistry. There are some terms, for example, molality, what type of language chemistry uses. There will be specific terms which will be used only in chemistry that you have to remember. Those are the ABCDs of chemistry. Then there will be some translations I will be telling you. Okay, so how to translate some information which is given in a chemical form, and how to translate in plain simple English. That is going to help you in numericals also. Okay, so let us go to this chapter thinking in the terms of a language of chemistry and not in terms of any other thing. Okay, language of chemistry, and whatever chemical definitions are there or whatever numericals are there, you will try to first of all say it out loud in terms of plain English. और अगर आपको plain English में समझ में आ गई चीजें, then you will understand the underlying chemistry also. Okay, so यहाँ पे बस आप लोग अभी यही focus कीजिए. Whatever it is given, can I make somebody else understand it? If you can easily make somebody else understand, that means you are okay with this chapter, you are fine with this chapter. Okay, so I will start with the important parts only, not wasting your time. I'll start with atomic weight. Okay, I will start with atomic weight. Now the term atomic weight, it on its own, it is defining something. Atomic weight. What is atomic weight? What do you guys think? Tell me. क्या होगा atomic weight, or else in chemistry it is the same thing, atomic mass. We use this interchangeably. What is atomic weight or atomic mass? Tell me. It will be mass or weight of what? An atom. An atom. Okay, easy definition, right? This is the first definition. Please write the mass of one atom. The mass of one atom. Now the mass of one atom is going to be very small. Okay, it's going to be very small. That is why the mass of one atom of any element. And they defined their own, the chemists, they defined their own unit. So we have the masses unit as gram, kilogram, right? Ton, quinton. So these are the masses. But for atomic mass, what unit we use? We use the unit AMU. The mass of one atom of any element in AMU. In AMU is called atomic mass. Okay, atomic mass. Now, if I take the mass of one atom, it is always going to be what? It is always going to be a pure number. That is a pure whole number. Please write, because we are taking only one atom, है ना? हम element की भी बात नहीं कर रहे. Please remember, the mass of an element and mass of an atom are different things. When I talk about elements, I have to keep in mind the different isotopes of those elements. Okay, I have to remember what? I have to remember different isotopes of that element. But when I talk about atom, then I'm talking about one particular atom. Okay, so that will always be a pure whole number. It will not be in decimals. Please write, it will be always in whole number. It will always be in whole numbers. Now, the next thing is 1 AMU is also equal to 1 Dalton. So Dalton is another unit that is equal to AMU, that is completely equal to AMU. Okay, so it will be always in whole number. Now,
what is 1 AMU? The definition of what is 1 AMU, it started with hydrogen. They said that the lightest element that we can find till now is hydrogen, and we could not find anything which is lighter than hydrogen. Don't write after this, okay? Please don't write after this. So they said that this is hydrogen is what? Mass of one hydrogen atom. If I take one hydrogen atom, it is equal to 1 AMU. Okay. And then you can assume what happened, that you get a weight balance. Okay. And then they started weighing the different things according to hydrogen atom. So they kept here helium, and then they added hydrogen. So the weight balance was not equal. Then they added another hydrogen. Then they added another hydrogen, another hydrogen. So when they added 4 hydrogen, it was equivalent to the weight of 1 helium atom. So they said that, okay, fine. The mass of helium atom is equal to how much? 4 AMU. Is that fine? Yes or no? Please tell me. Any problem? Any problem, guys? No problem, right? Similarly, what else will be there? Please tell me. After helium, what do we have after helium? What do we have after helium? Lithium. Lithium. Okay. So when they measured lithium, what is the mass of lithium? Do you know? Mass of lithium. What is the mass of lithium? फहद आप बताइए. 7. Mass of lithium. 7. Sorry. 7. 7. Right. AMU. So mass of lithium is 7. So they found that lithium mass is equal to 7 AMU. That means it was equal to what? 7 hydrogen atoms. Okay. Now slowly this definition of 1 AMU is equal to 1 hydrogen, it became obsolete, and they were not using this. They started using, just say for example, if I take oxygen atom. So they found oxygen atom, its mass was equal to how much? 16 AMU. Carbon atom was found to be 12 AMU. Okay. Now, when mining started, I hope you guys what is mining. When mining started and we started making we started using different metals, all of these metals were mostly found in their oxides. So oxygen was everywhere when the mining was in its peak. When mining started, I would say, not in peak, but when it started. So the chemists, they started getting each and everything in terms of oxide. So they defined the atomic mass, the 1 AMU, as what is atomic mass? They said that at 1 AMU will be equal to, they said that 1 AMU is equal to 1/16th, and 1/16th of 1 oxygen atom. So they defined it like this. But when after mining, the chemists, they started working in organic chemistry, and they found that carbon is everywhere. When they found carbon everywhere, they finally said that 1 AMU will be equal to 1/12th of 1 carbon atom. And this carbon should be the carbon 12 atom. Okay, the carbon which is having the mass as 12 AMU. So 1 AMU is equal to what? The definition that we have now is, what is 1 AMU? 1 AMU is the 1/12th mass of 1 carbon 12 atom. So please write with me. Next point. 1 AMU is equal to what? It is equal to 1/12th mass of 1 carbon atom. Now, since we are defining AMU as a relative mass, it is also known as atomic mass, is also known as atomic mass, is aka relative atomic mass. Okay. Right, next. Mass of atom in grams. Mass of atom in grams. So please write the mass of an atom or a molecule
in grams is called actual mass. Is called actual mass. So see, mass of oxygen in AMU, it is equal to 16 AMU. Okay, and mass of oxygen in grams, it is found out to be 16 into 1 upon the Avogadro's constant Na. Now 1 AMU is equal to what? 1 Na grams. This will be equal to 16 into 1 upon 6.022 into 10 to the power 23 grams. When you solve this, this will be equal to how much? 16 into this value here, it becomes equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. Okay. So 1 AMU is equal to how many grams? 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. 1 AMU is equal to 1.6 into 10 to the power minus 24 grams. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Is everyone done? Aisha, Iram, Fahad. Yes. Okay. Right, next. Average atomic mass. Now, in average atomic mass, you write. First of all, there are isotopes of elements that we have to understand. You write, since most elements are present in the form of isotopes with different atomic mass. Different atomic mass. Hence, their average value is taken. Their average value is taken. Okay. Write the formula to calculate average atomic mass. Average atomic mass is equal to the, first of all, we'll have the atomic mass of atomic weight of the first element into its relative abundance, plus the atomic weight of second element into its relative abundance divided by relative abundance of the first one plus relative abundance of the second one. Write this down. I will let you know what is all of these things. Is atomic weight.
Done. Done, guys. Yes or no, please tell me. Yes, Aisha, done. Aisha, Iram, done. Done, sir. Yes, done. Okay, okay. Fahad, आपने भी लिख लिया? Yes, Fahad, done. Yes. Okay, write a question. Write a question. Chlorine 35, or I should say like this, 35 chlorine and 37 chlorine are the two isotopes of chlorine, whose percentage abundance are 75% and 25% respectively. Calculate the average atomic mass. Okay, calculate average atomic mass. We have seen the question it is given. 35 chlorine is what? How many percentage? 75%. And the 37 chlorine, it is 25%. Now you will write the formula. What is average atomic mass? Average atomic mass. Please tell me, Aisha. What is average atomic mass? Yes, Aisha. Atomic weight into Atomic weight of the relative first one abundance into relative abundance of the first one plus plus atomic weight of the second one into relative abundance by relative abundance of 2. relative yes, relative abundance. Then relative abundance of 1 plus. ठीक है, अब ये बताइए आप. Iram, what is the first atomic weight of the first one? 35, 35 into what is its relative abundance? 75, 75 plus 37 into 25, into 25 upon. 75 plus 25. चलिए प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा. ये मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, ध्यान में रखिए. देयर इज समथिंग नोन एज बॉड मास. आई होप यू हैव बॉड मास. पता है आयशा आपको? ये सुनो, टेल मी आयशा. यस, पता है. हाँ हाँ, ठीक है, याद रखिएगा. ठीक है, ऐसा नहीं. ये बाकी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 75 37 को ऐड कर देते हैं पहले, उसके बाद पता नहीं मल्टीप्लाई करते हैं. वो मत कीजिएगा. एंड कैलकुलेट व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास एंड सेंड मी द आंसर इन चैट. फहद, आपको तो आ रहा होगा. ये सुनो फहद. यस सर, कर चुका हूँ मैं. हाँ, आपको तो पूरा चैप्टर हो चुका है आपका. पीएचडी Yes. चल रही है अभी, पीएचडी. लेकिन इसी वजह से ना हम आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे. ओके फहद, आप माइंड मत कीजिएगा. ठीक है, No लेकिन problem. आपको समझ में जहां नहीं आएगा, आप वहां पे हमको रोक दीजिएगा. हमको लगता है कि आप रोक देते हो. ठीक है, रोक दीजिएगा आप. ठीक है. Yes. Yes. हाँ, ठीक है.
आयशा नेरम कितना आंसर आ रहा है? ओके सर 35.5. सही है फहद? यस सर। सर इसमें मैंने पहले तो परसेंटेज को उसमें कर दिया, रेशियो में, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना थोड़ी। होगी आसान? यस। हमको नहीं लगता है। कैसे आसान होगी? मल्टीप्लिकेशन आसान होगा आप बोल रहे हो? यस सर, 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको 3 कर दिया, इसको 1 कर दिया आपने। और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा आपको। डिवाइडेड बाय डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा आपको। लेकिन बस यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको 100 से डिवाइड करने में दिक्कत नहीं होगा, है ना? हाँ तब भी थोड़ा जल्दी है, थोड़ा थोड़ा सा। है ना? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, वहां डिवाइड करना है ना? तो इसमें तो ये तो मैथ्स है, केमिस्ट्री नहीं है, जैसे भी कीजिए आप, है ना? राइट, नेक्स्ट। राइट द क्वेश्चन। सर इसका कोई यूनिट नहीं है? ये आपके पास एएमयू में आएगा, बिकॉज व्हेन यू आर गिवन दिस ना 35 क्लोरीन 35 37, तो ये एएमयू में रहता है। ओके, तो इसके यहाँ पे एएमयू आ जाएगा। You have 11 boron and 10 boron. Okay, are two isotopes of boron with percentage abundance 81% and 19%. 19%. Calculate the mass of boron element. ठीक है, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं देन इट इज ऑलवेज एवरेज एटॉमिक मास। जब एटम की बात करेंगे देन इट इज ऑफ वन एटम। इसको कैलकुलेट कीजिए। सर 10.81. करेक्ट। ओके, ये भी एएमयू में आएगा। राइट, नेक्स्ट। सर इसको हमेशा 100 से डिवाइड करना है? नहीं, 100 से हमेशा नहीं है। आपको हमने जो बोला है ना वही करना है। क्या बोला है हमने, बताइए? रिलेटिव अबंडेंस बोला है ना? इस नो, तो हाँ जो बट ऐड रिलेटिव करके अबंडेंस 100 ही कभी, आ रहा है। हाँ तो अभी दो सवाल में परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर फ्रैक्शन में दिया रहे तो, अगर हम इसको तो ये भी लिख सकते थे ना
जैसे ये है आपका, I would have written this as this is present in, ये हर थर्ड एटम इज 35 और एक एटम आपके पास क्लोरीन है। इफ यू टेक 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन, उसमें से 3 एटम किसके हैं, 35 क्लोरीन के हैं, और एक एटम आपका किसका है, 37 क्लोरीन का है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, ये सर फ्रैक्शन में भी दिया रह सकता है ना। अरे नहीं रह सकता है क्या, बताइए, हम सवाल देंगे, सवाल देंगे, समझ में आएगा फिर आपको। ठीक है, जो इक्वेशन लिखा है उसी को लिखे रहिए। ठीक है, एन एलिमेंट एक्स has the following isotopic composition. (200x) is 90%. 199x is 8%, and 202x has 2%. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो आई होप यू कैन डू दिस, यस और नो। आयशा निरम, relative abundance 1 into atomic weight into relative abundance 1, then atomic weight into Ra2 into atomic weight 3 into Ra3, divide by Ra1 plus Ra2 plus Ra3. Okay, Iram and Aisha, Yes. Yes, है sir. ना? ठीक है, आई होप यू कैन extrapolate the answer. बाद आपके स्कूल में और क्या क्या होता है फेस्ट में? एकेडमिक्स में और क्या क्या होता है, मतलब एकेडमिक नाच गाना तो होता होगा, है ना? थोड़ा बहुत, हाँ, हाँ मेनली थोड़ा एकेडमिक्स बहुत मेनली। अच्छा, एकेडमिक्स है। एक्चुअली है वो स्पेस, रेस टू डोमिनेट स्पेस मेन थीम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉम्पिटिशन सेट करें बहुत सारे, जैसे कि आज अच्छा डिबेट्स आज है। अच्छा, डिबेट था। ओके, तो डिबेट था तो मतलब क्या टॉपिक है डिबेट का? डिबेट था कि क्या था, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज स्पेस एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, आप गए थे डिबेट देखने के लिए इसका? देखने गए थे हम, यस। देखने गए थे ना? अच्छा, क्या आपको कौन सा पोजीशन सही लगा? डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है तो हर चीज का आंसर है ना? डिपेंड करता है तो हर मतलब चीज का आंसर है। आपका जैसे टेक पूछ रहे हैं। नहीं, हाँ। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वीनस पे अगर सैटेलाइट भेजें तो हम्म। वो आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी एंड ये वाला है। लेकिन अगर आप सैटेलाइट में जैसे जीपीएस ट्रैकिंग ये सब, वो सब के लिए सैटेलाइट भेजो हाँ, तो सेंस बनता है। जैसे कि मतलब सॉइल सैंपल लेना, ये सब वो सब मतलब इट्स मनी वेस्ट फॉर मी। तो लेकिन दैट इज नॉट स्पेस एक्सप्लॉइटेशन ना, वो तो अर्थ का एक्सप्लॉइटेशन होगा। नहीं नहीं, मतलब वही सब आ जाता है ना फिर उसमें, जब आप सैटेलाइट भेजोगे तो हम्म। वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा नहीं नहीं उसी नहीं पे। नहीं नहीं, एक सेकंड, क्या जनरेट होगा? वेस्ट मटेरियल? हाँ हाँ, स्पेस जंक होता है ना। स्पेस? नहीं नहीं, एक सेकंड। तो वेनस का क्या काम है? जंक का मतलब क्या है? जिसका कोई यूज नहीं हो, यस, जैसे है ना? हाँ, तो ये जो प्लैनेट्स है बाकी, इनका क्या यूज है? मतलब प्लैनेट्स है ना, जैसे वीनस है प्लैनेट ना। यस। तो वीनस वीनस तो खुद जंक है, फिर उसका तो कोई काम नहीं है। जंक का मतलब जंक वही है ना जो कोई, जिसका कोई काम नहीं। नहीं नहीं नहीं, मतलब अगर आप सैटेलाइट भेजोगे वीनस पर तो हाँ, वो स्पेस पोल्यूशन तो करता ही है ना। क्यों? क्या पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज पोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूटेंट? एक चीज होता है ना, व्हाट डज मीन बाय आज पोल्यूटेंट? मतलब उसका जो जो पार्ट्स निकल के गिरते हैं वो सब। हाँ ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन हाउ वुड यू डिफाइन अ पोल्यूटेंट? अच्छा, इज वाटर अ पोल्यूटेंट? बताइए फहद, मतलब इज वाटर? ये तो एक सेंसिटिव टॉपिक है ना, इसमें मैं कुछ खास कह नहीं सकता। फहद इज लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। अरे, नो वन इज गोइंग टू कैंसल यू। आप यहाँ पे बोल सकते हो। कोई आपके ऊपर ट्विटर में कोई थ्रेड नहीं चला देगा
कि फहद है एक क्लास 11 स्टैंडर्ड में हो ये सब बातें करता है। बताइए। नहीं, जैसे बता रहा हूँ ना मैं, मतलब मैं लेकिन हम दोनों एक बात तरफ- बोल रहे हैं, आप इस बारे में सोचिएगा कि जो जंक हम लोग बोलते हैं या फिर हम लोग जो बोलते हैं कि स्पेस जंक है, इफ यू आस्क अबाउट देम लाइक व्हाई डू यू थिंक इट इज अ जंक, लाइक वो किसके पर्सपेक्टिव में जंक है, इंसान के पर्सपेक्टिव में या स्पेस के पर्सपेक्टिव में जंक है? देश के इंसान पर्सपेक्टिव, स्पेस का क्यों पर्सपेक्टिव होगा? मतलब स्पेस स्पेस में तो, जो जंग चल रहा है। अरे हाँ लेकिन स्पेस स्पेस को कोई फर्क पड़ रहा है उससे? नहीं, ये तो नहीं मतलब पड़ रहा है ना। माइनर वो है ना, माइनर रीजन। हाँ मेजर रीजन तो एग्जैक्ट। वो है मनी। हाँ तो वो तो एक्सप्लॉइट तो इंसान का हो रहा है ना, स्पेस का तो कुछ नहीं हो रहा उसमें। स्पेस का क्या जा रहा हम्म। है ना? व्हाट वी कैन से दैट अब ह्यूमंस क्यों कर रहे हैं, हाँ ये बात अगर ये डिबेट होता ना कि कैन वी यूज पब्लिक मनी फॉर दीज मतलब फॉर दीज एक्सप्लोरेशंस, क्या हम पब्लिक मनी इस्तेमाल कर सकते हैं, देन दैट वुड बी अ बेटर, मतलब उसमें आदमी डिबेट तो अच्छे से कर सकता है। नासा लेकिन नासा में भी तो पब्लिक मनी जाता है। हाँ एग्जैक्टली वही हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, अगर डिबेट का टॉपिक कुछ और होता तो उसमें अच्छा आर्गुमेंट रहता। नहीं तो भाई हम हमको मन करता है फिर अभी जाने का। लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ डिबेट टीम एंड मेनी मॉडल एमयूएंस। तो फिर इसमें चीज दैट इज व्हाई आई एम सीइंग कि नुआंसेस जो होते हैं ना डिबेट में, व्हाट इज द टॉपिक, उस पे बहुत लोग मतलब खिल जाते हैं, बिकॉज कोई सेंस कुछ ऐसा तो नहीं ना कि इस डिबेट से कोई पब्लिक पॉलिसी बनने वाली है। यू आर देयर टू विन, राइट? हम्म। वेदर इट इज एथिकली करेक्ट, मतलब मतलब वो आपका सेंस बना रहा हो नहीं बना रहा हो, हाँ, बट वो भी यू होता कैन है। हैव, है ना? तो एग्जैक्टली exactly. अगर पब्लिक पॉलिसी की बात आती है तब एथिक्स की बात आती है कि आप सोचो पब्लिक के बारे में, है ना? बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट एक्सप्लॉइट द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मॉडल एमयूएन में आई थिंक somebody asked me, and they framed their question like this, that I would like to ask the delegate of, I think I was of Australia, huh? I would like to ask the delegate of Australia, uh, can you please give reasons for this particular policy? So he framed the question in a way that, can you give reasons? I stood up and said that no, I will not. नो। हाँ, right. So वहाँ एमयूएंस में डिबेट्स में स्कूल्स के यही सब होता है, that you just play with words, nothing else, and you know how, if you know how to play with words, then you are going to win. नो, इट वाज चलिए। अ पार्लियामेंट्री डिबेट ना, तो उसमें एक मतलब एक टाइमर होता है और उसी में बोलना होता है, बस जो बोलना है, कुछ नहीं कर सकते, अच्छा, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती उसमें। हाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, बट स्टिल, हाँ लाइक देयर विल बी रिबटल्स, राइट और नो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक बार एक, ये बोला एक बार वो बोला बस। एक नहीं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट अब कुछ बोलता अच्छा। है, एक दूसरी टीम का प्रेसिडेंट बोलता है, फिर हम्म वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, उसे अपोज करता है, फिर दूसरी टीम का वाइस हम्म। प्रेसिडेंट अपोज करते हैं, बस। और हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ। सो देयर आर रिबटल्स, राइट? हाँ, टाइप देयर ऑफ। मतलब, हाँ मतलब एक जैसे, हैव यू सीन एनी डिबेट्स इन ऑक्सफोर्ड? ये, यस, मेहदी हसन। यू से मेहदी हसन को सुना होगा, मेहदी हसन इज अ वेरी नाइस वन, बट देयर दे हैव अ पैनल देयर, राइट? मतलब उसमें बहुत सारे होते हैं, सो दे कैन डू सम रिबटल्स देयर। किसी ने यहाँ पे कहा है, मतलब नंबर 3 वाले का नंबर 4 वाला अगली टीम का कर सकता है रिबट, मैंने उसी तरह का कुछ है, लेकिन 2 लोग रहते हैं वहां पे आपके स्कूल में, राइट? यस। हाँ ठीक है। आयशा आप फिर से कीजिए, गलत है आपका, इरम आपका सही है। आयशा डू इट वंस अगेन। एक बात ध्यान रखिए आयशा, द वैल्यूज शुड बी नियर 200 और 199 और 202 ना, इनसे नजदीक होना चाहिए। और सेंड मी योर आंसर ना, लाइक योर फोटो ऑफ दैट पेज, हम देखते हैं क्या गलती की है आपने।
अब सही है. So this will be 199.96. I think this question was asked in 2007 के NEET में, and there was the option they had given, it was not 199.6 but एक option था 200 AMU. Okay, so if you are doing any MCQs, तो जो closest answer है उसी पे आप टिक कीजिएगा, ठीक है? So you can write says 200 AMU. Okay, and okay. इतना काफी 3 सवाल कर लिया ना आपने, एक आपका 3 वाले का भी हो गया. Okay, write the next topic, that is mole concept. Just wait a second. नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, yes or no, आयशा निरम, mole concept? Yes. Okay, so what do you remember about mole concept? Sir, nothing. Nothing. ठीक है. Now if you remember nothing then that is good. अगर आपको कुछ याद है तो फिर उसको प्लीज बोलने की थोड़ा कोशिश कर लीजिए. And now you will remember mole as number. ठीक है, जैसे what is 1 dozen? What is 1 dozen, guys? 12. 12, right? Anything which is have it like अगर उसमें 12 है then it is going to be 1 dozen, right? That is 12. What is a century? What is a century? 100. 100. ठीक है. Similarly जो mole है ना, so just Google something ना, number of stars in the universe. Google something, number of stars in the universe. बताइए कितने मिल रहे हैं? Approximately 200 billion trillions. 200 बिलियन ट्रिलियन. तो एक बार उसको नंबर में लिखिएगा. अच्छा, 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? How many zeros are there in 1 billion? How many zeros are there in 1 billion? 9. 9 zeros. और 1 Nine. ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन में 12 ना, 12. 12, right? 12. So I can say that it is 2 into 10 to the power 9 और 12 कितने हो जाएंगे? This will be 21, right? So this is the number of stars in the universe. ठीक है, जो आपको दिख रहा है वो भी नहीं, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में तो कितने सारे गैलेक्सीज, and you have this many stars in the universe. ठीक है, how many? 2 into 10 to the power 21. But in 18 ml of water we have 6 into 10 to the power 23 molecules. तो जितने स्टार्स है यूनिवर्स में उससे ज्यादा आपके पास 18 ml पानी में वाटर के मॉलिक्यूल है. So obviously chemistry, it deals with a very large number of atoms or number of molecules. I hope you can see like कितना vastness है नंबर का, है ना? पूरे यूनिवर्स में जितने स्टार्स नहीं है उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके 18 ml पानी में. Okay, so that is why chemistry has to get some kind of, ये डजन से काम तो चलेगा नहीं, सेंचुरी से काम तो चलेगा नहीं, so they have to get a number, which was very large. तो उन्होंने क्या किया, let me tell you what happened actually. आपको याद होगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं AMU की, है ना, we started with AMU. So AMU was 1 AMU. तो हम कैसे डिफाइन कर रहे थे? 1 AMU was equal to 1 mass of 1 atom of hydrogen. ठीक है, जो इनिशियल डेफिनेशन था उसी को लेके चलते हैं. They said that I will take 1 gram of hydrogen, and this 1 gram of, इन्होंने क्या किया, इक्वेट कर दिया 1 gram of hydrogen, that means 1 AMU को यहाँ बस ग्राम में कन्वर्ट कर दिया,
He said, I will take 1 gram of hydrogen and the number of atom that is present in 1 gram of hydrogen, I will call that number as mole. I will call that number as mole. You understand the origin of mole now? Please tell me. What did they do? उन्होंने क्या किया? They said that, okay, fine, 1 AMU is the mass of 1 hydrogen atom, but this 1 AMU doesn't make sense in our real life because 1 AMU का कोई बटखरा नहीं मिलेगा आपको, right? You will not get any weight balance that is giving you the mass in 1 AMU, right? You don't have any weight like that. So we all do calculation in 1 gram. We weigh things in grams. So they took the 1 from 1 AMU and they changed it to gram. They said that the number of atom that is present in 1 gram of hydrogen, I will call that as 1 mole. And that number was found out to be the Avogadro's constant. That number was found out to be Avogadro's constant, that is Na. So please write mole is equal to, this is the most basic definition of mole, that mole is what? It is always 6.022 into 10 to the power 23. Okay. If I write 1 mole of atoms, then this is how many atoms? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Okay, if I write 1 mole of molecules, then it will be what? Tell me, guys. 1 mole of molecules will be? अरे कितना होगा? Aisha, Aram, Fahad, please tell me. नहीं आया आयशा? 6.022 हाँ बस 6.022 ये बोलिए ना. I just want you guys to see this thing so that you are comfortable with these numbers. ठीक है? I know अब आंसर बहुत आसान है. Similarly, if I have 1 mole of ions, it's equal to, बोलिए कितना होगा? 6.022 into 10 raised to 23 ions. Okay, so this is 1 mole. Then you will write 6.022 into 10 to the power 23 is AKA, also known as Avogadro's number. Or Avogadro's constant. And denoted by Na. Sir, जी बताइए. one mole of molecules जो आपने लिखा है वहाँ लास्ट में आपने atoms लिखा है, वो molecules होते हैं. हाँ वो molecules होगा. My bad. Then yes or no, please tell me. एक और लिख लीजिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आपको बाद में कहीं इस्तेमाल होगा 12th क्लास में. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 electrons. Now this concept of mole is what? This concept of mole is in terms of number. Okay. All right, next. Definition of mole as mass. Mass के terms में moles. Definition of mole as mass. What is this? The mass of 1 mole
the mass of 1 mole, it is known as what? The mass of 1 mole of any atom or element in gram, okay? It's called molar mass. It's called molar mass. So this molar mass, it can be for atom or elements or also for molecules. So जो molar mass होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. Can talk the molar mass of, can talk about the molar mass. One is known as gram atomic mass. The other is known as gram molecular mass. Gram molecular mass. So what is gram atomic mass? It is the mass of one atom in grams. Gram molecular mass is mass of one molecule in gram. तो जैसे आपके पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास जो होता है आपके पास वो क्या होता है 1 एम ही होता है एक एटम का, उसको बस आप ग्राम में लिख दीजिए 1 ग्राम पर मोल. दिस मींस 1 ग्राम में आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन होता है. सिमिलरली इफ यू राइट फॉर कार्बन you got 12 grams per mole. Right, for oxygen 16 grams per mole. नाइट्रोजन के लिए 14 grams per mole. Okay, right. Also next for sodium 23 grams per mole. For सल्फर साथ में याद रखिएगा, सोडियम और सल्फर साथ में याद रखिए, ठीक है? सोडियम सल्फर प्लीज रिमेंबर इट टुगेदर 23-32 grams per mole. Next, right, chlorine 35.5 grams per mole. And what else? Calcium is needed in this chapter. Calcium के लिख लीजिए 20 grams per mole. चलिए, all of you write this down. From hydrogen to calcium. Done, guys? Aisha, Iram, Fahad. Done, sir. Okay. Now see, what is the mass of one molecule in gram? इसमें देखिए. For example, you have water molecule. Water से पहले let us say hydrogen molecule. So H2 is what? It consists of 2 hydrogen atoms. So you write 2 into the mass of hydrogen will be equal to how much? 2 into 1 is equal to 2 grams per mole. ठीक है? So hydrogen के लिए. Similarly, let us say for water. So water consists of 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen. It will give you what? 2 into 1 plus oxygen में कितना है 16, which is equal to how much?
18 grams per mole. ठीक है? Can you calculate if I give some more? Yes or no? Please tell me. Aisha, Iram, Fahad. Yes, sir. Yes. Iram, what about you? कर Yes. लीजिएगा. हाँ. Calculate कीजिए for carbon dioxide. Then calculate कीजिए आप for sodium hydroxide. Then you calculate for HCl, H2SO4, NH3, HNO3, CaCO3. Yeah, calculate for these.
Done guys, yes or no, please tell me. Done, sir. Yes, sir. सारा हो गया, चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए। और कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए, इरम आयशा, CO2 का कितना है? 44. 44. Yeah, 44 grams per 40. mole. NaOH is 40, correct. 40. Okay. बोलिए। 36.5. 36.5. Okay. H2SO4. 98. Okay. NH3. 17. 17. Okay. 63. HNO3. 63. 64. Yeah. 64. CaCO3 is 80. आयशा, आपका कितना है CaCO3? 64. 62। 80. फिर से कीजिए, CaCO3 दोनों कीजिए फिर से। फहद कितना आया CaCO3 का? Yes, फहद CaCO3। सर एक मिनट। अरे नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, ये नहीं कि नोट्स भी नहीं बना रहे हैं आप। Sir, 80. 80 सही है। फहद 80 आ रहा है? यस सर 80। ओके, now write next. Now we have seen definition of mole and mass, and now you will write definition of mole as volume. Okay. एक सेकंड, एक गलती हो गई, आप लोग ये लिख लीजिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, सॉरी, मास 40 होता है, 40 लिखिए था यहाँ पे प्लीज, 40 ग्राम्स पर मोल, और ये 100 हो जाएगा, 20 और ऐड कर दीजिएगा तो इसमें 100 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट करेक्ट दिस पार्ट, कैल्शियम इज 40 ग्राम्स पर मोल। मोल एज वॉल्यूम यहाँ पे लिखिए आप लोग, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मोल ऑफ गैस volume occupied by 1 mole of gas at STP, standard temperature and pressure, is called molar volume. Is called molar volume, and it is equal to 22.4 liters. What is STP? Standard temperature and pressure. So the temperature is equal to 0 degrees Celsius and the pressure is equal to 1 atm. Done guys, yes or no, please tell me. सर ये प्रेशर का एक बार पढ़ना।
1 atm which is equivalent to 1 bar. ठीक है, 1 atm which is equivalent to 1 bar. equivalent का साइन है. 1 atm equivalent to 1 bar. Done guys, आगे बढ़े. फिर completely equal नहीं होते हैं ना? नहीं, completely equal नहीं होता. इसी वजह से like right now the definition of one molar volume is also changed, because initially we took 1 atm and then later around 1980s or somewhere this 1 atm was changed to 1 bar, because 1 bar it is more in terms of Newton meters and pascals. It is more related to meters and pascal. So that is why when they changed this to 1 bar, this molar volume became equal to 22.7. लेकिन आपके इसमें अभी तक अपडेट नहीं है ये चीज, ठीक है. एंड ऑल्सो जनरली 22.4 लीटर्स ही लिया जाता है, बिकॉज देयर इज अ लेगेसी, राइट. मतलब केमिस्ट्री सारी अभी तक जो है इट वाज गेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवैल्यूएटेड एट 22.4 लीटर्स. इसी वजह से उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है जो पुराना डेटा है. सो एवरीवन यूजेस स्टिल 22.4 लीटर्स. एक देखिएगा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है आपके इसमें. स्टेट्स ऑफ मैटर में देन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रेशर, तो उन्होंने एक फुटनोट में ये चीज डाली हुई है. लाइक इन 1980s दे चेंज द डेफिनेशन ऑफ वन, द एसटीपी का ही उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया, 1 एटीएम से 1 बार कर दिया. उसमें ये फर्क आया कि दिस इज बिटवीन 22.7 लीटर्स. खैर, दैट इज हिस्ट्री, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आपको 22.4 लीटर यूज करना है, ठीक है. बट ये ध्यान रहे कि दिस इज ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस, लिक्विड भी नहीं, सिर्फ गैस. नाउ from here you will get 3 definitions or 3 formulas from which you can calculate moles. Please write number of moles, number of moles, ठीक है. if mass is given, if mass is given, number of moles को n से डिनोट करते हैं, ओके, स्मॉल n से. Then the formula will be equal to given mass by molar mass. If you have been given, if number of particle is given, if number of particle is given, then the number of moles will be equal to given number of particles divided by, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 into 10 power 23. ओके, 6.022 into 10 to the power 23. बिल्कुल यूनिटरी मेथड की तरह है ये. Right, next, if volume of gas is given, then the formula will be what? Given volume upon molar volume. और molar volume कितना होता है, 22.4 liters. Okay. Done, yes or no, please tell me. Done, sir. Write a question. Calculate the number of moles. Calculate the number of moles of, number of moles present in 5.6 liter of O2
at STP. कैसे कीजिएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन हियर? व्हाट इज गिवन हियर गाइस? अरे क्या दिया हुआ है इन तीनों में से? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? मास दिया है, पार्टिकल दिया है, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है? व्हाट इज गिवन हियर? वॉल्यूम। आयशा इरम, आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? यस आयशा इरम, कुछ पूछ रहे हैं हम। आयशा टेल मी। हाँ बोलिए आयशा। व्हाट हैपेंड? क्या सर? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? मास दिया, पार्टिकल दिया, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम तो हम ये सवाल पूछे तो आवाज नहीं जा रही थी क्या? नहीं आ रही। फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? कैलकुलेट कर पाइएगा? टेल मी नाउ, कैलकुलेट कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा? टेल मी व्हाट इज क्या है फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, बोलिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला? 5.6 by नहीं फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला पूछ। Given volume upon given volume 22.4 by गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 कितना हो जाएगा ये जो आंसर आएगा मोल्स में आएगा। ओके, सो बी 5.6 लीटर्स अपॉन, असल में 22.4 लीटर्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट पर मोल, तो इसको ऐसे लिखा जाता है पर मोल। ओके, व्हाट विल बी द आंसर? लीटर से लीटर कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आंसर? वन बाई 4, 0.25। डन? यस नो प्लीज टेल मी। आयशा एंड sir. निरम डन। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ O2 molecules in it। क्या कैलकुलेट करना है आपको? व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स है, फिर से पूरी पढ़िए क्या है नंबर ऑफ, Oxygen. है ना? O2 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एक सेकंड, मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए इसको, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन इट, यानी कि 5.6 लीटर में आपके पास कितने O2 के मॉलिक्यूल्स हैं? तो कौन सा होगा, नंबर वाला या फिर पार्टिकल, नंबर वाला, मास वाला, या फिर गैस वॉल्यूम वाला? बताइए क्या है यहाँ पे दिया हुआ, बताइए व्हाट इज गिवन हियर। सवाल में क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना? नहीं आ रहा समझ में आयशा नदम? नहीं आया सर पार्टिकल। नहीं आया सर। नहीं आया तो पढ़िए क्या दिया हुआ है आयशा सवाल। रीड इट आउट लाउड ना। मॉलिक्यूल्स नहीं दिया हुआ ना, यू हैव टू कैलकुलेट करना है नंबर। क्या मॉलिक्यूल्स के क्या दिए हुए हैं? मास दिया हुआ मॉलिक्यूल का, वॉल्यूम दिया हुआ मॉलिक्यूल का, नंबर दिया हुआ मॉलिक्यूल का, बताइए। यस आयशा, कैन यू रीड द स्टेटमेंट वंस? एक बार आउट जोर से पढ़िए उसको, हम सुनना चाहते हैं व्हाट यू आर रीडिंग। Calculate the number of O2 molecules. फिर से पढ़िए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ। O2 molecules. ठीक है,
तो बताइए इन तीनों चीजों में से क्या दिया हुआ है आपको? मास है, मास दिया हुआ है, बताइए हाँ या ना। नहीं, नहीं, मास के बारे में नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है ना वो, कि O2 के कितने पार्टिकल्स है। हाँ, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा बताइए। N इज इक्वल टू, N is equal to particles given number of divided particles divided by 6.022 into 6.022 into 10 10 to the power 23। अब ये बताइए पार्टिकल्स के कितने नंबर है, ये तो हमको निकालना है, ये सुनो, करेक्ट yes है ना। एंड ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स वी हैव, 0.25 0.25। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। yes ठीक है, राइट द नेक्स्ट वन उसी तरह, कैलकुलेट द मास ऑफ 5.6 लीटर। यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बोलिए आयशा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला यूज्ड हियर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given mass by molar mass गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आया, 5.6 लीटर का नंबर ऑफ मोल्स आया 0.25, 0.25 into the molar mass of O2, this will be the mass of O2 in 5.6 liters, yes or no, बात आई समझ में, yes yes कीजिए इसको। कितना आया नंबर, मास कितना है इसका बताइए O2 का, जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू हाउ मच आयशा, 0.25 इंटू, आयशा आई एम आस्किंग समथिंग ना। 32 ठीक है, एक तो 32 देखिए, हाँ 32 सही है, 0.25 दिस इज मोल्स, ये आपके मोल्स आए थे इनटू 32 grams per mole, this mole inverse and mole they cancel each other out and you will get this as 32 divided by 4 which will be equal to 8 grams, है ना। लिख लिया आप लोगों ने ये सनो प्लीज टेल मी, यस गाइस लिख लिया आप लोगों ने, yes Yes. ओके सी, सो इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज, देखिए सबके सेंटर में क्या है आपके पास, द नंबर ऑफ मोल्स इन द सेंटर, ओके।
The number of moles is in the center. Number of moles. Okay. Number of what? Number of moles. Now, if I multiply here, okay, if I multiply this number of moles by Avogadro's number, that means 6.022 into 10 to the power 23. So this is going to give me the number of particles. Okay, ये क्या दे देगा आपको? Number of particles दे देगा. Now, if you have number of particles, so if you divide the number of particles by 6.022, ठीक है, what you are doing, देखिए arrow देखिए समझिएगा, arrow में देखिए क्या है, divide by 6.022 into 10 to the power 23. Then you are going to get what? You are going to get the number of moles. Number of particles and number of moles आने के लिए divide by 6.02. Okay. Similarly, if you start from number of moles, okay, if you start from number of moles and you multiply the molar mass, ठीक है, number of moles into molar mass will give you the mass of substance. But if you divide it, if you divide the mass of substance by molar mass, you are going to get the number of moles. Similarly, if you have number of moles, okay, if you have number of moles and you multiply this by 22.4, multiply this (22.4 liters), then you are going to get what? The volume of gas at STP. Okay, volume of gas at STP in what? In liters you will get. If you have volume of gas in liters, then you need to divide this number by 22.4 liters and you will be getting what? The number of moles. ठीक है, तो प्लीज याद रखें, मास ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस का कोई रिलेशनशिप नहीं है अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू होके नहीं जाए तो. Okay, so the junction here is what? Always number of moles. You have to calculate the number of moles, then only you will be getting the mass of substance or the mass of or the volume of particular substance. So write this down. मुझे तो बताइएगा.
एरोज का प्लीज ध्यान रखें, ठीक है ना, एरोज अगर गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट स्टार्ट विथ मास ऑफ सब्सटेंस और इधर चले जाइएगा, ठीक है, प्लीज लुक एट द एरो। लिख लिया आप लोगों ने, सुनो प्लीज टेल मी। Done, sir. नन्ना, इरम, फहद, डन। Yes. ओके चलिए, सो आई विल गिव यू गाइस असाइनमेंट, प्लीज ये असाइनमेंट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बिकॉज मूल कंसेप्ट ही बेसिस है पूरे चैप्टर का। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मूल कंसेप्ट, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो गया तो फिर आगे की क्लास उतना अच्छा नहीं जाएगा आप लोग का, ठीक है। यू ऑल्सो हैव टाइम नाउ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास जो होगी आप लोग की ट्यूसडे को होगी, ठीक है, तो कुछ वक्त आपके पास, कल छुट्टी भी है। आई होप कल असाइनमेंट नहीं मिला तो हम आपको पर्सनली भेज देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। एक तो असाइनमेंट आपके वेब पोर्टल में अपलोड होता है, वो अच्छे से फॉर्मेट किया हुआ रहता है, और हम आप लोग को दे देंगे ऐसे जो हम पिक करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों सेम ही होगा लेकिन। ओके, सो मीट ऑन थर्सडे, ठीक है, प्लीज कीप रिवाइजिंग, नया चैप्टर है, रिवाइज करते जाइए, पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ओके, अच्छे से कीजिए। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कोई डाउट्स है तो बताइए। No, sir. नो डाउट्स, ओके, चलो, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। But